Hello everyone and welcome to Khel Now TV and the FIFA World Cup has taken us by storm. कल हमने पहला मैच देखा था कतर वर्सेस एक्वाडोर के बीच जिसमें कतर got humbled by Ecuador. They lost 2-0. There were plenty of expectations कि कतर कुछ ना कुछ करेगी लेकिन वो हार गई. आज भी काफ़ी सारे गेम्स लाइंड अप है. एक गेम अभी करंटली चल रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड ईरान और कल हम बात कर रहे थे कंडीशंस के बारे में और ये भी बात कर रहे थे हीट स्ट्रोक एक्सेट्रा दैट माइट कॉज द इंग्लिश प्लेयर्स सम प्रॉब्लम बाय द लुक्स ऑफ इट इट्स ईरान हु इज एक्चुअली suffering the heat stroke from England because they're losing 6-1. So this is something which we did not expect at all. We thought it's going to be a cagey affair, but we have my friends over here who are going to discuss about this match as well as the game that happened yesterday, as well as the games that are going to happen in a matter of time. So let me just introduce Alex over here, who is the man behind the thumbnail and plenty of other content, graphic related. So yes, Alex, welcome once again. Thank you. And the football encyclopedia himself, Mr. Ashish Negi, who is still quite engrossed in the game between England and Iran, even though I think Iran has a chance of penalty, so they're checking for the penalty on Iran. Very disappointing. Straight away, I'm very disappointed with the performance of both the Asian teams. I think out of all the Asian teams, I thought Qatar has that that extra edge because they were preparing for this for last 12 years and lots of meme on the internet we already seen what you're doing, this was you're doing for 12 years and I think they started well, but one thing is which will go against especially Middle East Asian teams is that the majority of India players plays in the Middle East. They don't play in the Europe at the top level. So see, one player yesterday for who made difference was Valencia, who played in the Premier League, who played the top level, and he has that experience to play for the play on the big stage and big occasion, and he rose up as a captain for the team and scored those 2 goals. And I think that's what I feel that the Asian teams still need to export more players to the Europe, and especially Middle East where players are very comfortable, just like India. Right. They don't want to go out to play in Europe, and I think that's basically I think that's the only reason I can feel, because but the way Iran lost today, match still going on, and we thought it will be 6-1, but Iran is can go to 6-2. Can go to 6-2. There's a penalty for Iran, but I think again, I think in this group, other 2 teams are Netherlands and the Senegal, right? Yes. Yeah. So I think maybe they will think that if they can somehow get, I think they are out of the group. I think I don't think they're not going to qualify after losing 6-1 for sure. But I think it's good for the confidence if they can score one more goal, and we have 10 minutes of stoppage time, which is also unseen. We have not seen much in the world football. So let's see if they can score the second goal here. Or Alex, and so goal that's a goal. 6-2. And That's it's a goal. 6-2. So it's 6-2. थोड़ा बहुत सेविंग ग्रेस यू माइट से, ऑल्दो यार गोल डिफरेंस में इनका काफ़ी फर्क पड़ने वाला है. तो जैसे आशीष ने यहाँ पे बात करी यार, एलेक्स, एशियन टीम्स एंड स्पेशली मिडिल ईस्टर्न टीम्स सब यही कह रहे थे कि दे विल बी adequate support. काफ़ी लोग आएंगे in large numbers supporting them. The heat will favor them because they're acclimatized to it. And England, although they were the favorites, हम सब यही कह रहे थे कि they might struggle to break the deadlock. 1-0, 2-0 maximum ये हो सकता है, और even a draw. लेकिन यार जिस हिसाब से कतर ने कल पहले डिसअपॉइंट किया, एंड ऑब्वियसली क्रेडिट टू एक्वाडोर, और आज इंग्लैंड दे जस्ट ब्लोड ईरान अवे, लाइक कंप्लीटली बैम्बूजल्ड देम. तो यार इन दोनों टीम्स के बारे में आपको क्या कहना है? कल के मैच से पहले शुरू करूंगा मैं. इक्वाडोर वर्सेस कतर, जो मेरे को लग रहा था कट टू कट होगा, इतना हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा. खैर वही था 2-0, बट आई वांटेड टू सी सम फाइट फ्रॉम कतर एज वेल. बट कल तो बिल्कुल वैसा लगा कि कतर थोड़ा गेम समझ नहीं पाई इक्वाडोर क्या कर रही है. इक्वाडोर का जो पिछला, जैसे कल भी डिस्कस करा था, जो मैनेजर है उनके, कितने लास्ट के कुछ 6 गेम्स वो क्लीन शीट रखते हुए आए हैं, तो अपने डिफेंस पे काफी हेवीली रिलाई करते हैं. 4-3-3 की अगर फॉर्मेशन में खिला रहे हो तो, और आगे लाइक पुश करवाना पसंद करते हैं. तो जो उनके पीछे के लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक्स हैं, जिन्होंने कल भी असिस्ट दिया है आई थिंक वेलेंसिया को, कल भी उनका बहुत मेजर रोल था. एंड कतर का मैं वही बोलूँगा कि मेरा बिल्कुल था कि हाँ, इवन जैसे डिस्कस कर रहे थे अभी कि यार होम गेम है,
होम एडवांटेज है, क्लाइमेट एडवांटेज है, तो थोड़ा सा वो फ्लेयर, थोड़ा सा वो आता। एंड कल भी मैंने बोलता जो उनके फॉरवर्ड्स है दो, कल फॉर्मेशन क्या थी 5 समथिंग, बट दे वर लाइक फ्रंट टू, फ्रंट टू। कल भी मैंने वही बोलता जो उनके दो ए हैं, आफिफ एंड अली, आई थिंक, जो अगर उनका लिंकअप अगर चलता है देन ये सच में ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या फिर आई वाज स्टिल इन द फ्लेवर ऑफ इक्वाडोर कि ये 1-2 हो सकता है। बट इक्वाडोर ने तो भाई बिल्कुल ही वो था कि फर्स्ट हाफ से उन्होंने दिखाया, थोड़ा डोमिनेट करना शुरू करा एंड कर दिया अच्छे से। सेकंड हाफ के बाद जब तक कतर आई कि अब हम गेम समझ गए हैं, बट तब तक लेट हो गया था। एंड कल भी फिर मैंने बोला था कि जो भी टीम पहले गोल स्कोर कर देगी या फिर अपनी स्लाइटली लीड बना लेगी, वो पाक दबस कर देगी। कल इतना पाक दबस वैसे हुआ नहीं, बट हाँ सॉर्ट ऑफ पाक दबस, बिकॉज इक्वाडोर सेकंड हाफ में इतना अटैक नहीं कर पाई। और कल तो मैच देखने में आई थिंक हम सबको बड़ी दिक्कत हुई, बिकॉज पूरी स्ट्रीम अटक के जो चल रही थी, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है अभी भी जियो ऐप। आई थिंक होना भी चाहिए, बिकॉज it seems like a joke to me, you know, you're taking the rights of one of the biggest दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टूर्नामेंट या स्पोर्टिंग इवेंट के आप राइट्स ले रहे हो, एंड देन आप स्पेशली योर चैनल आपने नए लॉन्च किए, टीवी पे कोई इशू नहीं है, यू नो, देन जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर द टूर्नामेंट पहले आप बोल चुके कि ये टूर्नामेंट वूट पे आएगा, यू नो, आई थिंक इट वाज ऑफिशियल अनाउंसमेंट। वूट भी सोशल मीडिया अपनी पोस्ट पे डाल रहा था कि सिर्फ यू नो वूट पे दिखेगा एंड ऑल, जो उनके एड्स होते चल रहे थे, एंड देन ऑल ऑफ सडन आप एक टूर्नामेंट से पहले ही जस्ट अनाउंस करते हो कि जियो सिनेमा पे आएगा। तो आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन a huge group of Reliance, you know, they have a big group, different teams. So I think there's a different team for Jio Cinema, there's a different team for Wood, there's a different team for Sports 18. So I think there's a lack of coordination here, and especially इतना easy नहीं होता है टेक बनाना। I'm a techie myself, तो आप रातों रात ऐसा टेक नहीं खड़ा कर सकते हैं कि आप 5 से 6 4K स्ट्रीम्स आप टीवी पे या मोबाइल ऐप्स पे भेज सको, and you know when majority of the Indian people are going to watch it. So I think there's a lack of coordination planning, and I think स्टिल अभी भी देख रहे हो आप कि जो जितनी मोबाइल ऐप्स पे हैं, टीवी ऐप्स, वो लैग कर रहा है, ब्राउजर पे फिर भी चल रहा है डिजिटली, एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल हैव सैटेलाइट टीवी एट देयर होम एनी मोर, यू नो, टाटा स्काई डिस्क होती थी पहले या एयरटेल की है, आपके घर में है। मुझे तो मतलब मैंने तो अपने जहाँ मेरी मम्मी भी रहती हैं देहरादून, वहाँ पे भी हमने क्या बोलते हैं डिजिटल टीवी, मतलब यू नो वी मूव्ड इनटू दी OTTs एंड ऑल टू वॉच द टीवी आल्सो। सो आई थिंक ये मिसकैलकुलेशन हो गई है उनसे। अब कैन दे चेंज इट, बिकॉज अब रातों रात किसी ऐप्स के अंदर ऐसी कोडिंग नहीं कर सकते या कुछ नहीं करते कि आप बिल्कुल से चेंज कर दो, यू नो। इट विल टेक टाइम फॉर देम टू फाइंड आउट, यू नो, दैट व्हाट्स द इशू, एंड आई एम नॉट श्योर if they can do it in next couple of days. They will need some time to debug the issue and then find the, you know, ultimate solution and then fix it also. Right, and कल से हम देख रहे हैं ट्रेंड भी हो रहा है वो, and you know plenty of dissatisfied fans over here, unsatisfied fan over here, beg your pardon. So the thing is that it's the biggest sporting carnival here. Not just the biggest footballing event, but the biggest sporting event, and you would want कि सबसे best service आपके सामने हो, high definition हो, without any lag, but that's not been the case so far. But we are hoping that you know things improve over here. So let's go ahead and आगे के मैच के बारे में भी यहाँ बात करते हैं। आशीष, would you like to say anything about England, anything else before we move ahead? I think of course we'll discuss. I think England looks good. I still feel Marcus Rashford should start. Right. I think they eventually find the formula ultimately before coming the big games. You know, I think they need to find the formula, and I think still feel that Marcus Rashford should play. He's a good goal scorer, right, and he's shown his presence in this. You know, after coming from the bench straight away on the score line. I said about Luke Shaw yesterday. You know, that he's the one who might make difference, and he was the one who provided the assist for the first goal. Fitter to me. And of course, see, I read about him. So England only there's a theory, or there's I think enough proof also. He's a different body type. You know, everybody have a different body type. So yes. he's not fat. Maybe kind of a bit chubby. You know, just like Wayne Rooney used to. Right. That doesn't mean that he's slow. That doesn't mean that he's unfit. You know, he's still. I think he's the quickest, one of the quickest English player now, especially in that back six of 2 midfielders and 4 defenders. So I think he looks fit, you know. But Luke Shaw also he takes time to warm up and, you know, give his performance. And I think it's a great thing for him. The World Cup is happening in the middle of the season. That means he's coming at his peak of his fitness. You know, he's not in the pre-season mode right now. Right. Generally, when World Cup happens at the end of the season, you know, you're not on the peak. You're not on your peak of his body programming or fitness programming, and then there's some fitness issues. I think that's a great thing for him, you know, this season, that it's happening in the middle of the season, and I'm looking forward to see him more, because especially the games which will be very tight in the nature, then you need your fullbacks to, you know, make the difference, and I think he has all the potential to make the difference. And Harry Kane looks good.
Sterling looked good. I think Bukayo Saka. Saka. Two Yesterday I goals told about him. I will see. That's the only kind of a natural right winger England have right now. And I think one player which I'm looking still I have not seen much. I'm not sure did he came on today from the bench is Phil Foden. I think substitution. Did he came in? Substitution, he came in. Yeah. Okay, I know, but I think he is the English most technical player, you know, and I still feel that when the games are tight, you need your players with talent to, you know, stand up and give the performance. Foden has that arrogance and, you know, attitude in him to do so. So I think I'm looking forward to see. And overall, I think even when Jack Grealish have scored the goal, that means that what kind of match England is having, you know, because Jack Grealish had not scored goal for City for a while, you know. So I think let's see what they do in the bigger games. But I think disappointed with the Iran for sure, and Qatar also from last night. Right. तो एलेक्स यार मतलब हम बुकायो साका की तारीफ करी है हमने यहाँ पे. हैरी केन ने 2 असिस्ट प्रोवाइड किए, राशफोर्ड ने गोल मारा, जैक ग्रीलिश एज वेल. लेकिन एक प्लेयर यार जो मैंने इवन बिफोर वी स्टार्टेड एक्चुअली प्रीव्यूइंग द गेम्स मैंने बोला था इंग्लैंड की तरफ से, जूड बेलिंगम. कल भी बोला था जूड बेलिंगम विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. और आज भी एक गोल करा एंड काफ़ी ज़्यादा वर्क रेट आज देखने को मिली जूड बेलिंगम की. क्रिएटिव थे वो, एंड ये मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था थोड़ा सा कि अच्छा मैनेजर ने ये चीज़ चेंज करी है. क्योंकि जब आई थिंक कल सर आपने बताया था कि गैरेथ साउथगेट जब अंडर 21 के मैनेजर थे, उनका शायद तभी से वो चीज़ चलती आ रही है कि अपने फुल बैक्स को यूज़ करते थे ओवरलैप अंडरलैप के लिए, और डीएम फिर अकॉर्डिंगली मैनेज करता था. आज जो उनके फिर गोल वाला सेक्टर जो बना है जहाँ से, वो बिल्कुल सेंटर से बना है. तो ये चीज़ जहाँ पे उन्होंने इम्प्रोवाइज करी है वो काफ़ी अच्छी देखने की. एंड आई थिंक जूड बेलिंगम के लिए शायद यही चीज़ वर्कआउट करती बेस्ट. आई थिंक तो यार जूड बेलिंगम का अगर आप देखो ना यार, ही इज अ बिग गेम प्लेयर. चैंपियंस लीग में भी इस सीजन जो है काफ़ी गोल्स मार रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन इफ यू लुक एट द वे दैट ही वाज कमांडिंग द मिडफील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आखिरी गोल में भी जिस हिसाब से पास डाला था, इंटरसेप्शन रेट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. एंड ही इज जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज और बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए अभी से खेल रहे हैं. देयर वर रूमर्स कि रियल मैड्रिड आर स्काउटिंग हिम. आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी. और मुझे यार ऑनेस्टली लगता है कि 100 बिलियन के अबव जा सकता है ये प्लेयर. एंड आपको एक चीज पता है, व्हेन ही वाज इन बर्मिंघम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ही वाज इन बर्मिंघम, तो उनकी जो जर्सी नंबर है वो रिटायर कर दी थी. सच में? तो एट द एज ऑफ 16-17 they retire his jersey number. तो एट द एज ऑफ 16-17 you're retiring a jersey number for a teenager. And लोग यही कह रहे थे कि ऐसा क्या है यार कि आप इसकी जर्सी रिटायर कर रहे हो, इट्स नॉट अ रोनाल्डो और एनीवन एल्स. एंड अब लोगों को हल्के हल्के देखने को मिल रहा है कि यार ये एक्चुअली एक हीरा है. एंड you know, you just have to keep an eye on him. और ये मैंने कल भी कहा था, अगर गैरेथ साउथगेट ये इस पूरी टीम को क्लिक करवा देता है तो फिर इंग्लैंड बहुत लंबा जा सकती है इस टूर्नामेंट पे. एंड जूड बेलिंगम विल बी आवर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. फिल फॉर्डन ऑफ कोर्स. I think one thing which Southgate have changed already is the formation, you know. He's not playing back 3 anymore. So I think that means you have one extra attacking player in the team, and which will definitely make the difference in the playing style, you know, because people feel that he is very regressive, he is very, you know, defensive coach. And I think once you remove that extra defender, that means you have an extra midfielder or extra attacker on the pitch, which will definitely increase your you know, make your attacking play better and increase your goals tally. And talking about goals tally, they have scored 6 goals, you know, so it's not a, you know, it's not a random that they have scored 6 goals, but I think they have worked upon it, this formation, they have worked upon this style. And you know, and but I still feel when the match are tight, you know, when they're playing the better teams, let's see what they do against Netherlands, you know, for sure. I think that will be one of the challenging match for them, but then their defense will be challenged today. And see, on if you have to take any negative for England side today, it's the 2 goals which they have conceded, you know. So I think that's what they want to will improve, get the clean sheet, you know, make sure they win the match cleanly, because once you go to the later phase of the World Cup, they are very close. You can't afford to have mistakes, you know, you can't afford to have concede easy goals, because to give an example, if they concede 2 goals first, it's tough to come back and win against team like Iran, even team like Iran also. तो आप अभी भी एशियन टीम्स के थोड़ी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ डिफेंस में उनको बेटर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर जस्ट इमेजिन इफ इंग्लैंड कंसीड 2 गोल्स फर्स्ट, जैसे उन्होंने 2 गोल बाद में कंसीड किए हैं, आई डोंट थिंक देन इट इज एज इजी टू स्कोर 6 गोल्स from coming back than scoring in the beginning, you know, because that's the thing. But of course, credit to England, they have done very well today, and I think Iran
did shown heart in couple of the attacking play, but I think the cohesive in Iran units we have seen in past who are very tight in defense was not to be seen today. We all remember that Argentina-Iran game, which Argentina won 1-0, was a very good footballing game. So I think let's see. Now we have Netherlands, Senegal coming up in a couple of minutes, and they have one more game, Wales versus USA, and that will be another very interesting game. Wales versus USA. And only negative point for me is that the Asia has been allotted 8.5 slots for the next World Cup. If the Asian team performance continues like this, I am sure there will be Western media, English media, even US, even in South American media, they're going to raise big question marks to the FIFA that do you want these kind of teams in the World Cup, in the World Cup, because these are the best Asian teams. Absolutely. There is no doubt over that. And now we had 4 more Asian teams, which means the second tier Asian team like UAE, like China, like Vietnam qualifying to the World Cup, and I think it will be. I'm not sure the remaining Asian teams, Japan, Saudi, South Korea, have to step up and at least provide that fighting, competitive games, not games like 5 or 6 Asian teams don't need basketball scores. They need to make sure matches are competitive, and that's the only way it will beneficial Asian teams going into the next World Cup. मेरा एक क्वेश्चन है वैसे दोनों से कि रीस जेम्स एंड काइल वॉकर सिंस नहीं है वर्ल्ड कप में, तो क्या इसी चीज़ ने गैरेथ साउथगेट को थोड़ा पुश करा कि अब तो टैक्टिक्स चेंज करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा मतलब सेंट्रली ही मुझे अटैक में चलना पड़ेगा? तो क्या ये था, क्या आगे चल के ये चीज़ हैम्पर कर सकती है इंग्लैंड को? बिकॉज ठीक है एशियन टीम है तो फेयरली इनके लिए आज इजी था कंपटीशन, लेकिन फिर आगे चल के जब नॉकआउट स्टेजेस होंगे तब की क्या ऐसी कंडीशन रहेगी? यार मेरे हिसाब से ना Kieran Trippier, although we do prefer Kyle Walker and Reece James, but Kieran Trippier, he's a veteran. 2018 World Cup में he was one of the top performers for England. Atletico Madrid में also he had a good season. Newcastle के against also he's actually playing really well. One of the talisman आप कह सकते हो. और आज भी he did have his moments. Of course अब he's aging और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि he's aging like fine wine, but at the same time he does have the experience, and that is something which is actually critical in such big events. तो मेन रीज़न वाई, जैसे कि मैंने कहा, मिडफील्ड आज ज़्यादा हमने देखा डोमिनेंट थी यहाँ पे इंग्लैंड की, वाज बिकॉज जूड बेलिंगहम वाज वन ऑफ द की रीजंस, एंड डेक्लन राइस जिस तरीके से बॉल कैरी कर रहे थे, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, एंड ईरान डिड नॉट हैव अ स्निफ. ये फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी नहीं. द पोजीशन एट वन स्टेज आफ्टर 20-25 मिनट्स वाज लाइक 92% इन फेवर ऑफ इंग्लैंड. तो उससे आपको दिखता है कि आपके मिडफील्ड बैटल वहीं इंग्लैंड जीत रही है. तो इट्स गुड फॉर देम कि सेंट्रली भी अब अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिलाइंग ऑन देयर विंग बैक्स, दे आर आल्सो रिलाइंग ऑन देयर मिडफील्डर्स, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वेयर दे हैव लैक्ड. So that's a good improvement on England. That's what I believe. अब Senegal versus Netherlands की भी बात करते हैं, because वो मैच स्टार्ट होने वाला है 30 मिनट्स में होने वाला है बिल्कुल. और प्लेइंग 11 भी आ चुकी है. Senegal की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडवर्ड मेंटी, सबली, कोलाबेली, डियालो, एन मेंडी, कोयोटे, इद्रिसा गे, सीसे, डियाटा, इस्माइल सार और दिया. और नेदरलैंड्स की अगर आप बात करेंगे तो नोपॉट, डमफ्राइज, डिलिट, वैन डाइक, आके, डेली ब्लेन, फ्रैंकी डी योंग, बेरगुइज, गैक्पो, जॉनसन और बर्गवाइन. तो आज मैं देखता हूँ आशीष आप एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, वो है आप अंडरडॉग्स को जो है आप एडवांटेज देते हैं. तो इस मैच में क्या आपको लगता है सेनेगल और नेदरलैंड्स में आप किसको? I have to see the coach, and the Dutch team. There's two things which need to be highlighted in that. First is the selection of Delete over the Timber. Timber and Van Dijk and AK was their back three throughout the qualifiers, throughout the matches. But this season, and of course Manchester United fans will know this. He was linked to Manchester United. Right. He was supposed to join Manchester United before Martinez. And it was his Louis van Gaal suggestion and that he should stay at Ajax and play more games. His form since then has dipped very badly, and I think he has lost his starting position to Delete, who is also very talented centre back. Once he moved from Ajax to Juventus back in 2018-19, he was the best centre back in the world football. So I think that's one thing. Another thing is the injury to Depay. He's still not fully fit. So, and he has been the main goal scoring threat for Netherlands team. So now today the whole, I think the attacking talent is, of course, there are some like
Gakpo is a very great player. Right. You know, he can play anywhere in the front, and I think he might play center of these as a center forward. Even the Netherlands official handle have put in him as a number 10 position. You know, it's a more of a 3-5-2 formation. But I think, you know, we might see Bergwijn and Jensen playing in the wider. You know, make it 3-4-3, and Gakpo, he has done that for PSV. He's a more of a left winger though, Right. but he likes to play, you know, in center of the pitch. You know, I think it's a more of a Rashford type of a vibe who can play both the side, but I think it's a better on the center of the pitch as compared to Marcus Rashford, because as United was linked to him also, I watched his couple of matches live, watched his couple of scouting videos. So I think he's the main goal scoring threat for Netherlands. main goal scoring. I will say a player for Netherlands Right. today, which Senegal need to be careful about. And this Senegal team, I was talking to my friend who works in African football. He was telling me that the Senegal is the best African team in this World Cup. So, if talking about underdogs, we're talking about underdogs from Asia, from Africa. So, if from Africa somebody needs to do the upset, I think it's Senegal. You know, they can do it. Will they pay less? Netherlands struggle to find the goals. That's the Right. big question to answer. एलेक्स यार, मैं तुमसे सेनेगल के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सेनेगल का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 2002 में पहली बार आई थी वर्ल्ड कप में, और इनके लिए एक ड्रीम रन था बिकॉज दे मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स, लाइक फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, एंड दे मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स। एंड उन्होंने अपने ओपनिंग फिक्चर इससे पहले जो 2 बार आई हुई है, दे वन अगेंस्ट फ्रांस हु वर द चैंपियंस बैक देन, एंड देन दे वन अगेंस्ट पोलैंड इन 2018। तो फर्स्ट गेम में जो है यूजुअली दे डू मेक देयर मार्क, और उनके मैनेजर ने भी यही बोला कि वी विल लीव आवर मार्क इन दिस वर्ल्ड कप। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट ग्रुप आप कह सकते हो, काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी आप कह सकते हैं ख़तरनाक टीम्स मौजूद है, बट सादियो माने कितना बड़ा मिस होने वाला है आज उनके लिए, ये आप बताइए। सादियो माने डेफिनेटली, अब वही होता है कि लिवरपूल बायस अगर मैं वो करके चलूँ, बट उनके बायन जाने के बाद आई थिंक मिस तो करा है लिवरपूल ने भी, उन्हें काफ़ी मिस कराई है। सीजन जैसे जा रहा है पता लगता ही है। एंड सादियो माने आई थिंक इस सीजन के वो रहे हैं अफ्रीकन प्लेयर ऑफ दिस ईयर, आई थिंक ऑफ दिस सीजन। तो या और इवन बैलन डोर की रेस में भी आई थिंक वो सेकंड आए थे। तो हाँ, एक बड़ा इम्पैक्ट तो था। अगर फिर भी अगर वो इंजरी होती और उनकी फॉर्म डिप भी होती, तो भी एक होता है ना, एक सीनियर प्लेयर के होने का जो प्रेजेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि फिर वो है ना कि पूरी टीम भी अपने आप में मोटिवेटेड रहती है उसकी वजह से। तो हाँ, इम्पैक्ट दिख सकता है इन माय ओपिनियन, लेकिन उनके पास फिर भी एक्सपीरियंस की अगर हम वैसे बात करें या नोन प्लेयर्स की अगर बात करें, तो लाइनअप में कुलुबैली तो है उनके पास। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार इतना जो आज का मैच होगा, हाँ, स्पीकिंग ऑफ लाइक कुलुबैली एंड द डिफेंस वाला पार्ट की हॉलैंड वाली जो डिफेंस है, मैं उस डिफेंस को पूरे डिफेंस वॉली बोलूंगा, बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग विद 5 एट द बैक, राइट। यू स्पीक ऑफ वैन डाइक हो गया, जो अपने आप में लाइक द लीडर वैन डाइक। हाँ, फॉर्म यस, वैन डाइक की अगर इस सीजन की बात करो बहुत वो रही है। एंड आशीष सर ने भी काफी वो बोला था कि यार वैन डाइक का जो पूरा गेम है ना, वो सॉर्ट ऑफ है ही ऐसा कि ना वो कमिट नहीं करते हैं आगे आकर, वो पीछे लाइक जॉस्टिंग वाली पोजीशन में ऐसे रहते हैं एंड वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जो भी आगे फॉरवर्ड होगा। तो या बट फिर अगेन जैसे मैंने बोला, सीनियर प्लेयर है, प्रेजेंस मैटर करता है, तो नीदरलैंड के लिए आई थिंक उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स बायर्न की इस बार की न्यू डिफेंस वाली साइनिंग मैथायस डे लिक्ट अच्छे फॉर्म में है वो भी। तो ये जो डिफेंस की जो धीरे धीरे करके वॉल ये बिल्डअप हो रही है ना, ये बहुत वो होगी, सॉलिडिफाई करेगी एंड सेनेगल के लिए काफी टफ कंपटीशन होगा। एंड ऑफ कोर्स ये नेथन आके भी हैं आई थिंक। तो या आई थिंक ये स्टार प्लेयर को तो यहाँ पे इनको ही नाम दे दिया। देखना ये है कि अगर जो डिफेंस 5 एट द बैक अगर जा रहे हैं, तो क्या ये इनमें से मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज अभी भी इनके पास मलेशिया को लाने का ऑप्शन है। एंड मलेशिया भी आई थिंक उनका सीजन ठीक ही जा रहा है, इतना बुरा नहीं है। तो या अभी भी उनके पास फिर ऑप्शन है पीछे खिलाने को। सो हाँ, फ्रैंकी डी जॉन्ग की थोड़ी सी बात करी थी सर ने भी कि आप थोड़ी देर पहले वो मजाक में कह रहे थे कि बार्सिलोना में यार बिल्कुल खराब हो रहा है उसका सीजन, यू शुड हैव सेल हिम ऑफ, बिल्कुल ऐसे यार दे शुड हैव सेल हिम ऑफ टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट डेफिनेटली यू नो इतना पैसा दे दिया फिर भी दे दिया। एंड both the clubs also agreed the deal in principle, you know, for the player. And I think you might say that eventually maybe he didn't want to move out, you know, and coming from Barcelona to Manchester, both are very different cities, you know, and everybody will like the sunshine of Barcelona, you know, if your family and everything. And I think he didn't want to move before the World Cup. It was a dream move. I think you know that's the only reason I think that he didn't move, you know, and he is not playing much for Barcelona.
The coach said that Sergio Busquets might retire, then finally he might play the number 6, which many Barca fans still feel that he will still not play as a starting number 6, because they also are behind the Wolves defensive midfielder, who Portuguese guy, I just forgot his name. For Barcelona? Yeah, Portuguese नहीं है, Wolves में खेलता है number 6 उनका. Ruben Neves. Neves. They want to sign Ruben Neves for that position, And I think he needs to move if he don't play much, I think maybe this window, next window. But I think it's important for him to have a great World Cup, because there's no excuses at the World Cup कि मैं अपनी बेस्ट, मैं बोलते नहीं कि मम्मी के पास जाके बताऊंगा कि मैंने बेस्ट पोजीशन पे नहीं खिलाया, मैं तो स्ट्राइकर हूँ, मुझे डिफेंडर खिला दिया, मैं तो डिफेंसिव मिडफील्डर में सेंटर मिडफील्ड खिला दिया. So I think that's the one thing with De Jong, and I really like him as a player, he's a midfielder who can do everything, can score goals, he can provide assists, he can also cover for your other midfielders, cover spaces, block the attacking players of the opponent team. So I think important for him and important for Netherlands that he performs, and I think Louis van Gaal will make sure that he has built this team around him and Depay, both these two stars. And sadly for Netherlands, both of them were not playing regularly coming to this World Cup, and Depay eventually is also injured. So I think that's the major concern. But let's see, they have good enough attacking players in the team, and these are attacking players doing very well in the Dutch league. Some like Gakpo is a great talent, and that's the one talent I'm looking forward, because when you talk about young players to watch out for, I think he's on that list, to watch out for me. I think आज का मैच एक तो बहुत ही क्वालिटी होने वाला है. The reason is because Senegal is the highest ranked African team, and Netherlands जो है 2018 में qualify हुई नहीं थी World Cup के लिए. They've made it to the World Cup finals on 3 separate occasions, but they haven't won once. So they need to make a statement over here, because we all know how talented a Netherlands team is usually. और Louis van Gaal ने भी recently एक statement दिया था, which I think even Ashish agrees with. उन्होंने ये बोला था कि don't believe that we have the best players on earth in our team, but I believe in team building and in tactics. I believe that we can go far. तो वो खुद अग्री कर रहे हैं कि हमारे पास शायद सुपरस्टार्स है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास टैक्टिक्स है, प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करेंगे, और शायद हम वी कैन गो द डिस्टेंस. So Van Gaal भी आपसे यहाँ पे सहमत हो रहे हैं. I really like him as a coach. Yeah. Even though he was, I will not say he was not successful with Manchester United, but I think he deserved the more time with Manchester United, and I think he is the one who created these great coaches. Mourinho and Pep all worked with him or during his big career, and he has built many clubs. Louis van Gaal, Barcelona, modern Barcelona we see, or Bayern for example. And even his team in the clubs which he coached in Netherlands has done very well. And in 2014, the run of Dutch team, I think they were just step away from winning that World Cup. Yes. Very unlucky not to win that World Cup also, because they were one of the better entertaining team for me, because they play football in a way, they play very direct. That's one thing. They're not going to waste the time by playing tiki-taka and all. The moment Brent, for example, sees the space, he's going to put the long ball up front for attacking player to attack on the empty spaces. So I think I'm looking forward to Netherlands team, and मैं अगर अपने थोड़े से स्कूल डेज में जाता हूँ, back in 2010 Netherlands was my that time, and because India is not playing, so we depend on players and the coaches you like to support the team. Netherlands was the one team which I supported in 2010 and 2014 World Cup, and because Robin used to play for them in that time, he was one of favorite player of all time for me, the favorite player for me. So I used to watch lots of Netherlands national team, and I hope they do well, especially for Louis van Gaal. The situation with his health and everything, the amount of hard work he has put in this team to getting them qualified. You have to remember, they missed the last World Cup, and I think they also missed 2016 Euros if I'm right. So. They missed the 2016 Euros. It was the Louis van Gaal and when the coaches think their coach, I think there's a Koeman who went to Barcelona by making the position empty for the national team coach. Another coach came. They were struggling to qualify for Euros and this World Cup. By the way, Louis van Gaal came, make the team solid, get them qualified to the main both the major tournaments, and I think. And maybe that's the reason he also went and well, in terms of the health. So I think these players will want to perform for him, and I think they will make sure that they will make their coach proud in this World Cup.
वेल की प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं एलेक्स, उसके बाद हम प्रेडिक्शन ले लेंगे इस मैच के, उसके बाद वील क्विकली ट्रांजिशन टू यूएसए वर्सेस वेल्स बिफोर द किक ऑफ। तो कॉडी गैकपो की अगर हम बात करें, ही हैज़ 13 गोल्स एंड 15 असिस्ट फ्रॉम 24 अपीयरेंसेस इन द डच लीग दिस सीजन। एक चीज रह गई है, गोलकीपर का जो चॉइस था हम लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई थिंक रेमको पासनेर को दिया जाएगा ये वाली चीज, क्योंकि काफी ये सोशल मीडिया पे भी हाइप अप हो गया था कि कितना ही वाज 37 व्हेन ही स्टार्ट प्लेइंग फॉर अ क्लब एंड फिर 38 पे मतलब ही प्लेड हिज फर्स्ट नेशनल गेम एंड अब आज एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद पासनेर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज फिर उनको नहीं लिया। Right. Well, the coach's decision over in the Netherlands team, right? Yeah. There was a quick question over the selection. They dropped another goalkeeper, which they have dropped from the squad, you know, and who was playing for Netherlands team for regularly. So I think once you selecting your team for national team, there's always a question mark on the selections of players that ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. I think it's ultimately the coach who is responsible for the result. Right. If he feels that these particular set of 26 players going into the World Cup, these set of 11 players are best for the team in this World Cup. Say for example, let's take an example of England. If England was struggling in the first game, people would have raised question mark over the selection of Sterling, you know, why Rashford was not playing, why he was not playing, why not Grealish, why not Ford, and blah blah blah. But they have won the 6-1, you know, so no one is saying anything. Right. So that's the thing. I think it's a coach is the ultimate person who is responsible to get the result out of the team. If Louis van Gaal feels that he's the best goalkeeper he has, this is the best 11 he has, then I think that's the way to go forward. Well, I think only the result will tell us that, you know, he is the right or wrong. Then we can raise the question, you know, why he played this goalkeeper, why this not goalkeeper. Well, Louis van Gaal is an interesting person. He makes interesting choices. Sometimes they work, sometimes they don't. आज देखते हैं कि किस तरफ जाएगा। और सेनेगल की तरफ से अब मैं बात करने वाला हूँ कि की प्लेयर कौन हो सकते हैं उनके लिए। इन स्पाइट ऑफ सादियो माने नॉट बीइंग देयर, Boulaye Dia can prove to be a threat in the attacking front. Dia has 6 goals from 14 games in the Serie A this season. So one player I also have Imlai Sarr. Ismail Sarr, yes. Ismail Sarr, Definitely. sorry. You know, I think he has kind of linked with all the top clubs in England. Somehow not made that big move. Yes. You know, and I think he has enough in his tank to you know, to threat any defense in the world. So I think, as I said, even if Mane is not there, I think Alex, you prepared some one line for Mane. What was that? Can you tell us? ये मेरा नहीं था, ये बहुत वो चल रहा था हाइप कि माने को नहीं लिया, तो भैया हमें खेल नाउ के जर्नलिस्टों ने वो लिया था कि भाई कि कोई माने या ना माने, पर जो ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं वो है सादियो माने, अनफॉर्चुनेटली। Definitely, यार, it's a massive blow, but let's just बस ये है कि क्या अभी लाइक ये डाया हो गया या सार हो गए कि अगर आई फील कि इन यंग प्लेयर्स ने अगर आज ड्रॉ भी कर दिया ना, तो फिर इनके अंदर आई थिंक वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि they'll finish second in the group. Yeah, I think. Like I said, they are the top ranked African team. They did win AFCON as well. तो इनको बिल्कुल भी lightly नहीं ले सकते. But also it's a very important game for both the teams now. With England has won the 6-2, Yes, which it means is, they have it a is. goal difference of 4. Definitely. You know, and whoever lose this game might have, you know, lesser chance to go to the knockout stage. That's what we like about World Cup. You know, one each and every game are very important. You know, and I think hopefully we'll see a great match. You know, and So we'll just take your predictions quickly then. I think I will not go with underdog anymore. I think Netherlands. I think that's it. That's the only about thing. Maybe दो दिन में हो गया है. No, maybe Japan, and when South Korea play, then I will think about backing them. But I still feel if any African team has the potential to beat the European team, it's the Senegal. And that's what my friends in Africa has also told me. But यार बात वही है ना, मैं भी तो एशियन फुटबॉल देखता हूँ, मैं भी तो बैक कर रहा था कि यार जब कतार अच्छा करेगी, ईरान अच्छा करेगी, ये होगा वो होगा, मैं कह रहा था 1-0 इंग्लैंड जीतेगा, 1-1 होगा, यहाँ 6-2 हो गया, तो you never know. एक चीज ये है देखने वाली, कल हम बहुत वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये हीट फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर आएगा। आज इंग्लैंड की टीम को देखते हुए कहीं से लगा नहीं कि ये क्लाइमेट फैक्टर जब आप जीतते हो ना, तो ये सवाल चीजें सब गायब हो जाती है। हीट आज भी होगी, गर्मी आज भी लगी होगी, पानी उन्होंने आज भी पिया होगा, पर आप जीत गए हो, देयर इज नो क्वेश्चंस। अब लोग बोले ईरान को, जैसे आपने बोला, आई थिंक यू सेड इन योर इंट्रो दैट ईरान फेल्ट द हीट वेव्स, यू नो, सो दैट्स द ऑल थिंग्स गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन you win the game, you know, then everything is fine. Then, you know, ultimate only thing you talk about that you have won the game. Wow, this player played well. This played well. So till now we have not seen the, you know, weather impacting the match much. I think there is no drinks breaks also, right? So No, so I think because the AC, It's 25-26 degrees over because there. you have to remember the stadiums are fully air conditioned. Yes. You know, they have spent lots of money
and there were So lots we will of. have to praise Qatar over there. But I want to add one more thing. Lots of migrant workers Yes, have struggled to That's reach these beautiful stadiums. Right. So I think maybe it's a tribute to them, not Qatar, I will say, to the workers right. who have died by building these A lot of stadiums. hard And work. so that credit to those workers, but of course the credit to the engineers and the country also. Yes. So you have to give credit to them overall, the organizing committee and the Qatar, that at least the external factors are not getting into play in the Right. football match. So score predictions, Alex, quickly. स्कोर प्रेडिक्शंस मैं भी वही कहूँगा इस बार तो आई एम फर्स्ट एक्सपेक्टिंग कि फ्रैंकी डियोंग एंड गेप्को का लिंक अप प्ले सॉर्ट ऑफ देखने को मिले Okay. गेप्को की लॉन्ग बॉल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है सो या कुछ ऐसा सही मैं एक्सपेक्ट करूँगा अभी के गेम में एंड कितना बोलूँ मैं थोड़ा सा टाइट जा सकता है बट आई विल गो 3-1 in favor of Netherlands. 3-1 in favor of Netherlands. Ashish, what about you? I think we'll see a clean sheet from Netherlands. It will be 2-0 or 3-0 for Netherlands. I also believe that it's going to be a 2-0 win for Netherlands. I think Louis van Gaal has drilled them really well और काफ़ी अच्छी performances देखने को मिल रही है. So all three in favor of a Netherlands will. आगे बढ़ते quickly. There's another game 12:30 AM which is technically tomorrow. USA versus Wales. Al Rayyan Stadium में होगा. And एक interesting fact आपको मैं बताऊंगा आशीष and Alex. Wales are making their first appearance at a World Cup after 64 years. The last time they made an appearance was in 1958. And they made it to the quarterfinals and they lost to Brazil. But आप सबसे लंबा ड्यूरेशन है अब तक आपको एक बात रखना चाहिए कि Wales biggest footballer ever, Ryan Giggs, has not played in the World Cup, So his major, I think his appearance on the major international tournament is the London Olympics, if I remember correctly. He played for the Great Britain there. So I think that's all about the World Cup, and that's why the European teams and European Association wants more slots for Europe. They still feel, I think there's a theory given to the FIFA by these European Federation is that the teams who get qualified from Africa and Asia to the World Cup, if they play against the teams who are not qualified from Europe, for example Italy in this case, the other European team, they might beat these teams. So I think that's the thing, because it's a very tight competition in Europe when you talk about winning the European Championship, when you talk about qualifying to the World Cup. So I think that's the Wales first appearance, and I think Gareth Bale will be very happy that at least he is playing the World Cup in his life, Right. at least in footballing life. I think he was only waiting for this before to get retired. नहीं तो मुझे लगता है बेल तो 3-4 साल पहले रिटायर होके गोल्फ वगैरह में अपना करियर स्टार्ट कर चुके होते अब तक. But I think he will be very happy. But I think let's see. Captain American Christian Pulisic is there in for the USA, and I think he is their star man. But I think this is the game which is even game, Yeah. I think both the teams are on paper equal, and I think we'll see very good game if you ask me. और अगर आप recent form की बात करें, दोनों टीम struggle कर रही recently, तो win, loss, draw, and then 3 losses on the bounce for Wales. USA का अगर बात करें तो win, draw, loss, draw. So inconsistency दोनों की तरफ से. Wales की ranking 19 है FIFA rankings में, और USA की जो है 16 है. So जैसे कि आशीष ने कहा, काफ़ी लेवल होगा, काफ़ी इक्वल होगा. मुझे भी लगता है इट विल बी डिफरेंट. आई थिंक इट माइट बी अ 1-0 विन इन फेवर ऑफ एनी टीम ओवर हियर. यार तुम बताओ एलेक्स, USA राइट, they have qualified, like they have been able to qualify for World Cups time after time, but the problem is कि वो अगले राउंड पे नहीं जा पाती है. There have been plenty of occasions. तो आज का गेम कितना इंपॉर्टेंट है यूएसए के फैंस के लिए. ऑल्दो वेल्स के पास काफ़ी बिग गन्स है. यू टॉक अबाउट एरन रैमसी एंड गैरेथ बेल. यू थिंक यूएसए के चांसेस अच्छे हैं आज के मैच में? मैं नेगी सर के साथ एग्री करूंगा. मैं यही बोलूंगा, ये एक्चुअल में टाइट कंपटीशन हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है यहाँ पर, और काफ़ी कट टू कट ये मैच देखने को मिल सकता है. बिकॉज प्रेशर या सारी निगाहें होंगी हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिश्चियन पुलिसिच पे कि आई थिंक वही है इस बार. हाँ, तो उन पर ही होंगी, और डेस्ट को अंडर एस्टिमेट वैसे नहीं करना चाहिए. तो बाकी तो फिर भाई गैरेथ बेल इतना, फिर वो था एक टाइम पे हमने उनके करियर का हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट देखा था मैड्रिड पे, एंड देन फिर वही था कि अब नाउ ही इज इन ये यूएसए वाली लीग. he is in the MLS. हाँ, MLS. Now he's in the MLS. But फिर again the same factor which I told about Sadio Mane कि एक leadership वाला जो factor है, I think Gareth Bale जो वो थोड़ा when he puts up that Wales jersey, right, he transforms into another beast. वो टॉटनहम वाला Gareth Bale आ जाता है. मैं वो प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल पे टीम्स के लिए अच्छा खेलते हैं, इट्स नॉट जस्ट Gareth Bale, there are more players who play very well for the international team, and he is one of those. बट ये एक और रीजन इसलिए भी है बिकॉज हम उसको खेलते हुए मैड्रिड में देखते ही नहीं. अगर आप क्लब फ्लोर में खेलोगे ही नहीं तो आप सिर्फ इंटरनेशनल में ही देखोगे, तो फिर आप वहीं अच्छा खेलोगे. सो आई थिंक दैट्स द रीजन मे बी दैट वी फाइंड दैट वी प्लेइंग वेल फॉर वेरी 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 गुड. आई थिंक वन ऑफ दोस प्लेयर आई पर्सनली फील
somehow who got disrespected by Real Madrid and their president, you know, and then उनका भी एटीट्यूड वैसी हो गया, चलना जाने दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे क्या दिक्कत, मैं गोल्फ खेल लेता हूँ जाके अपना. In spite of that, Gareth Bale still had over 100 goals for Real Madrid और 2 ट्रॉफी सिंगल हैंडedly भी जिताई है. वही चीज करो, 2 चैंपियंस लीग सो जिताई है. एक कोपा डेल रे भी जिताया था वो, अगर आपको याद है. It's you know, it's only club like, I think only club who can do this is Real Madrid, you know. To I'm not saying that they have done it purposely, you know, but I think he deserved more from Real Madrid, you know, maybe more respect. बट आई थिंक वो जो एटीट्यूड गैरेथ बेल का भी बन गया, यार ठीक है यार, चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, 350K मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है हर हफ्ते, मुझे टेंशन किस बात के लिए नहीं है. तो की प्लेयर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं एलेक्स. तो लाइक आपने बोला था क्रिस्टियन पुलिसिच इज द कैप्टन, बट द प्रॉब्लम इज कि रिसेंटली ही हैज बीन स्ट्रगलिंग विद फॉर्म. ही हैज़ अ गोल एंड एन असिस्ट फ्रॉम 13 अपीयरेंसेस फॉर चेल्सी दिस सीजन, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में उनके 5 गोल और 1 असिस्ट थे 10 अपीयरेंसेस में से. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई है यूएसए के लिए हु कुड एक्चुअली स्टैंड आउट, Giovanni Reyna. He's a 20-year-old lad. He plays for Borussia Dortmund. His father also represented USA. His name was Claudio Reyna. अभी फिलहाल 2 गोल्स है 10 अपीयरेंसेस में से बोरोसिया डॉर्टमंड के लिए, लेकिन उनका और सर्जियो डेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द राइट, दैट हैज़ बीन क्रिटिकल फॉर यूएसए, स्पेशली इन द कॉनकाकैफ क्वालिफायर्स, क्योंकि 41.2% ऑफ द अटैक केम फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो अगर आपको देखना है कि यूएसए कहाँ से ज़्यादा अटैक करेगी, तो राइट हैंड साइड से ही अटैक करने वाली ज़्यादा से ज़्यादा. मिडफील्ड में आई डोंट थिंक इतना रिलाई करेगी. एंड फॉर वेल्स आपको पता है गैरेथ बेल एक हो गए, एंड दूसरे आयरन रामजी, डैनियल जेम्स एज वेल. तो ये कुछ नाम है, बट नेक एंड नेक होने वाला है यार मेरे हिसाब से. सी मैं भी वही बोलूंगा, नेक एंड नेक ही, बिल्कुल कट टू कट ही ये मैच होने वाला है. दोनों को आई थिंक इक्वल कंपटीशन ही देखने को मिल सकता है. और अब तो कुछ मैचेस जो स्टार्टिंग इनिशियल मैचेस में देख लिया कि क्लाइमेट का कुछ खास इतना फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है अभी फिलहाल तक. तो या अभी फिर वही अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट वाला टॉपिक, तो यही बोलूंगा मैं कि हाँ, इतना इफेक्ट करेगा नहीं शायद दोनों टीमों को, और ये बिल्कुल ही नेक टू नेक एकदम कट टू कट होने वाला हो, यही देख सकते हैं. और शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इनमें से जितनी की प्लेयर्स की हमने बात करी, ये यहाँ पे ना कुछ क्रूशल मूवमेंट्स या एकदम जैसे मैच विनिंग मूवमेंट्स हमें प्रोड्यूस करके दें. एब्सोल्युटली. और बस ये मैच होगा आपका 12:30 बजे, विच इज टेक्निकली टुमारो लाइक आई सेड. इसका भी एक क्विक प्रेडिक्शन ले लेते हैं. एलेक्स, हु डू यू थिंक आर द फेवरेट्स हेडिंग इनटू दिस गेम? आई विल गो विद वेल्स. स्कोर लाइन कैन बी अ ड्रॉ बट 1-0. अच्छा, so 1-0 in favor of Wales. And Ashish, what about you? I think this is the tough prediction, right? You know, and I think I'm just checking the Wales formation and USA formation. I think football will win tomorrow. मतलब on 12:30, not the soccer. ये football की होगी. Football जीतेगा मुझे. That's what I personally feel. And I think you know, considering the Daniel James and you know, and Nico Williams, Ben Davies, Joe. Only I think major concern of Wales is if Joe Allen's is fit or not. He's a hamstring issue. Right. So if his hamstring is repaired or not, that's a big question mark for Wales' success in this World Cup. If he fit Joe Allen, I think the Wales will do well tomorrow. In a couple of hours, not tomorrow. You know, in 12:30 AM. If you talk about Indian time, the match is going to start. I think Wales will win 2-0 for me. Alright, so 2-0 in favor of Wales. And यार वेल्स के बारे में हम ये तो कह रहे हैं कि 64 ईयर्स हो गए उनको वर्ल्ड कप में नहीं क्वालिफाई करे हुए, एंड फाइनली आ गए. लेकिन अगर आप याद करेंगे 2016 यूरो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेमीफाइनल में भी आए थे. दे लॉस्ट टू पोर्चुगल इवेंचुअली, रोनाल्डो शो था. एंड उसके बाद अगले यूरो में जो है फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे. बट they do have it in them to actually deliver it on the big stage, and finally now that they are on the big stage, even I predict a Wales win. मुझे लगता है कि they might win 1-0. Dan James और Gareth Bale का जो pace है, that might bother USA's defense. So yeah, I am also in favor of Wales. और यार आज तीनों ने सेम ही दोनों रिजल्ट्स के साथ, नेदरलैंड्स के साथ तीनों गए और वेल्स के साथ तीनों गए. अंडरडॉग के हम बैक नहीं करेंगे. हम कोई अंडरडॉग के साथ अब डन हो गए बस. अब नहीं मतलब see, that's what you know, and there will be giant killing in this World Cup. I'm saying again, you know, कोई ना कोई बड़ी टीम ग्रुप स्टेज में बाहर जरूर होगी. ये हर वर्ल्ड कप में होता है, हर एडिशन में हुआ है, और इस वर्ल्ड कप में भी सेम चीज होगा. एक ना एक एटलीस्ट बिग टीम विल गेट नॉक आउट इन ग्रुप स्टेज. दैट यू हैव टू सी व्हिच टीम, you know, but the performance of two Asian teams, Qatar and Iran, of course, have disappointed me. Will the Senegal, the African teams, finally stand up? But you have to see that Senegal have lots of, you know, the players who played the top level, the Premier League level. So I think only thing is the major concern for them is the gel time. They don't have much gelling time, you know, and you know they don't spend lots of time together as a team. So I think if somehow they can sort that out, then I think Senegal have that thing in them to
do the first giant killing of the World Cup, maybe defeat Netherlands today, considering they are playing without their main player, goal scorer, Right. Depay. So I think we have to look forward to seeing that what Senegal does. I think we are minutes away from the kickoff now. Yes, we're just 7 minutes away from kickoff, and I think that's it from our end. Anything else that you guys would like to add? एक मैच जो कल का आई थिंक yes, हम तो of उसका course. रिव्यू ही डिस्कस कर रहे होंगे दैट इज हमारे गोट फाइनली पधारेंगे फुटबॉल पिच पर एंड अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया एक और मिडिल ईस्टर्न टीम आप क्या Asian सऊदी team अरेबिया नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं नहीं कल नहीं नहीं see, पर मैं एक चीज No, but Saudi- काफी होगा कल हाँ सऊदी आज ईरान को भी बहुत अच्छा सपोर्ट था विद सी ना लॉट्स ऑफ मेडल दे हैव ट्रैवल्ड बगल में ही है सऊदी हाँ, अरेबिया तो and होम क्राउड आ सकता है आ सकता है एंड वन थिंग आई वांट टू टेल अबाउट सऊदी अरेबिया जस्ट लाइक ईरान दे आर रेगुलर ऑन द वर्ल्ड कप यू नो एंड they have been playing world cup since 90s if you remember. Right. They have been one of the Asian team who playing regularly. They are the one of the Asian team who has the football culture back at home. Qatar doesn't have that, you know. UAE doesn't have that. It's Saudi Arabia, Iran in the Middle East who have bigger football culture than these teams, you know. And I think, see, I'm not saying that they will defeat Argentina, but it's not going to be a cakewalk for Argentina tomorrow, you know, because I think they will feel the difficulty, they will feel the intensity of the opponent team. It will not as easy as England versus Iran for Argentina, I think so. I just beg to differ over here. I think it's going to be a cakewalk for them because they're 36 games unbeaten, and with the kind of form Di Maria, Lionel Messi, Lisandro Martinez, or anyone else for that matter. और फर्स्ट गेम अगर आपको याद है लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया का रशिया के साथ हुआ था, we all remember what happened in that game. It was a 5-0 victory in favor of Russia. So I think I'm just saying मैं फेक उम्मीद लगा रहा हूँ क्या पता कुछ कोई तो टीम कुछ कर ले एशिया से मतलब कुछ तो हमें उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर तो एशियन कोचेस अगर आप सुन रहे हैं ये और ये लाइव हमारी देख रहे हैं हाँ तो आपसे दरखास्त है प्लीज अच्छा करें हम लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं बीइंग अंडरडॉग्स अभी जापान और कोरिया बाकी है। हाँ जापान और कोरिया बाकी है। these two teams will be the you know Right. the flag bearer for Asia in this World Cup. But I hope that as it was in Middle East, Right. you know many of these player families will be able to have in the stadium. I thought that they will you know they will at least compete. You know first two games Qatar didn't compete at all. Right. It's a one-sided affair. Eventually whatever the stat says. Same with Iran. You know totally one-sided game. I thought कुछ तो होगा कुछ हुआ ही नहीं पूरे मैच में एटलीस्ट दे स्कोर 2 goals that's the only positive from this match for the Asian fans and the Iran fans बस अभी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए बिकॉज़ अभी भी है उनके पास एटलीस्ट 3 मैचेस तो but see once you lose परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल once you lose एक चीज होता है ना ये भैया मेरा काम बने ना बने दूसरे का भी ना बनने दो तो ईरान अब तो बाहर हो गई है बट कैन दे से स्टॉप फॉर एग्जांपल नेदरलैंड और सेनेगल टू क्वालिफाई वो एक होता है फिर वो जिद्दीपन आ जाता है कि यार मैं तो जा नहीं रहा हूँ इसकी टांग भी खींच लेता हूँ अपने साथ नीचे हम तो डूबे सनम तुम्हें ले डूबेंगे वेल रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी अपसेट्स देखने को मिले थे यू नेवर नो फीफा वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे भी अपसेट्स देखने को मिल सकते हैं तो एशियन टीम्स अभी भी चांसेस है यहाँ पे सो या दैट्स अबाउट इट आई गेस जस्ट 4 more minutes left for Senegal versus Netherlands another amazing encounter in front of us and both teams are missing some of the key players Memphis for Netherlands Sadio Mane And yeah, for there was a Senegal fun fact, right? Yeah. A fun fact as in just a stat कि Memphis Depay was just 9 goals away. कि रॉबिन वैन पर्सी के लाइक कुछ आई थिंक All इक्वल time, करते हैं I think he will do it. He will do it. तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी थी उनके पास बट वही But I think he might be fit, you know. It's just that Luminal don't want to risk him right now. He knows that, you know, he will need him later on when the big games comes. I think he might feel that Senegal is the game which his team and the other players can do the job for him. तो यहाँ पे हो गई सेनेगल नेदरलैंड्स की बात USA वर्सेस वेल्स की बात एंड अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया को भी हमने कवर कर लिया है सो या कल 6:30 भी एक मैच होगा राइट व्हाट इज द गेम एट 6:30 oh yes I'll just have to take a look at that but लेट मी जस्ट लुक so yeah अभी तो फिलहाल 3 मिनट बाकी है सेनेगल tomorrow is 22 Denmark versus Tunisia is tomorrow at 6:30 so you want to do a quick preview on that just I think Denmark is the one of the underdogs who can do well who have the dark house team which Dark everybody horses, has said is the Denmark, you know, and then Tunisia is not coming with a good form into this World Cup, you know, and I think Denmark is the favorite for me to go into this. One player I want to watch is Hannibal Musbury at Tunisia, you know, and as a Man United fan, you know, he has been a great loan in the championship, you know, and I think if he gets chance, he has that in him. जो मैं बोलता हूँ एक swagger चाहिए होता है एक प्लेयर के अंदर कि मुझे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना है. I'm not afraid of anyone. I will go and make my presence feel चाहे मुझे red card ही मिल जाए. He is that kind of player, so I'm looking forward to see him. And I think Denmark is the favorite. And then also we have Mexico, Poland, which we'll discuss tomorrow. You know, 9:30. eventually it's a 9:30, and France will be in action against Australia. And France, talking about France, Benzema has been rolled out of the World Cup, and there's a report in France that you know.
Benzema was not very keen to play this World Cup. So अभी ये rumors निकल के आए हैं फ्रांस से, तो देखते हैं, eventually there's a report saying that he kept France medical team in dark with his medical. Even for Real Madrid जो है काफी मैचेस उन्होंने मिस किए इस सीजन. तो नहीं क्योंकि आई थिंक मे बी ये हो सकता है कि शायद अनफिट ही हुआ और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं खेल सकता हूँ, एंड देन अल्टीमेटली दे प्लान विद हिम एंड देन इवेंचुअली गॉट इंजर्ड एंड दे डिडंट कॉल अप एनी रिप्लेसमेंट व्हिच वाज सरप्राइजिंग टू मी. सो लेट्स सी. That's it for my side, Wali. Alex, Denmark का quick Denmark and डेनमार्क. आई थिंक जब हम फर्स्ट एपिसोड में हम डार्क हॉर्सेस डिस्कस कर रहे थे तो डेफिनेटली हमने डेनमार्क का नाम लिया था. तो या अभी भी मेरी बेट है डेनमार्क पे कि डार्क हॉर्स है एंड कुछ ना कुछ वैसे करके अभी आगे आ सकती है. तो ये तो कल के मैच के बाद ही पता लगेगा कि वैसे फॉर्म क्या है, मेंटालिटी किस मेंटालिटी से ऐसे खेल रहे हैं. तो या So Argentina, Saudi Arabia at 3:30 p.m. tomorrow. Denmark versus Tunisia at 6:30 p.m. Denmark मेरे हिसाब से भी dark horses है and they play some really silky and some really good football over there. So I'll be excited to see them and the fluency is going to be from Denmark's end. Quite excited for it and we're just moments away from Senegal versus Netherlands. तो आप भी ज़रूर देखिए और उसके अलावा हमें भी ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. खेल नाउ टीवी, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड जॉइन द डिस्कशन विद अस. वी विल बी बैक टुमारो. टिल देन कीप वॉचिंग खेल नाउ टीवी. गगन एंड हो गया.